Hello everyone, welcome to Civilstap. My name is Akash Sherawat and I'm your sociology faculty. Now you know that your HPAS mains examination is scheduled from middle of December, and in this series we are helping you to understand the nitty-gritties and demand of the civil services sociology HPAS examination papers demand so that you come out with flying colors. This is the second video in a series of 8 videos where we are discussing the previous year question papers of HPAS means sociology optional and taking cues from these papers. We are trying to identify or learn how to write quality answers. At the same time, if there is a repetition of any question from the previous year question paper, you guys will be always prepared. This is a valid fact about almost every examination that if you do not understand the requirements of the examination, you won't be able to perform well. And that's why in this series, we here at Civilstap are trying to provide you all those tools that you come out victorious in your sociology optional paper that you'll be writing somewhere in the middle of December. So in this particular video, we are going to discuss the Sociology Paper 2 of the year 2020 conducted by HPPSC for their HAS exam. So let's start discussing. I'll be following the same structure of answers that I did in the previous video. So the first question is, how do you look at the issue of minority? Discuss the violence and discrimination against religious minorities in India. Okay. So basically, if you try to identify the keyword from the nature or the essence of this question, we can see that the question is trying to ask you to comment upon the minority consciousness in Indian society. Whenever there is a question related to issue of minorities, the question is targeting nothing but minority consciousness. And in the answer, you have to say that all the issues of minorities they emerge from minority consciousness. If you are able to establish minority consciousness in your answer is going to get good marks because it is the minority consciousness which is responsible for violence and discrimination of the various minorities in India. Or you can even say vice versa, that it is the violence and discrimination that results into minority consciousness which become the basis of issue of minorities. So taking cues from these keywords or taking the essence of this question, what can be a good introduction? A good introduction can be an introduction by defining what minorities are. Well, you can start your introduction by saying that in India, neither the constitution nor any law particularly go for defining who actually are the minorities. जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आंसर कोई ऐसी चीज एग्जामिनर को प्रेजेंट करता है which is a true fact related to that question scoring automatically goes up by 1 or 1.5 marks. Are you getting my point? So you have to go for providing a definition of minority in the introduction, and you will open your definition by saying that there is nowhere in the constitution the concept of minority has been explained. However, for the purpose of minorities in India, we look at two types of minorities: linguistic minorities and religious minorities. Minority by default we take as any group that has less number of individuals. Any group that has less number of individuals has been referred to as minorities. And India being a culturally diverse country can be accommodated with two type of minorities. One is linguistic minority and second is religious minority. Now, when we discuss the minority consciousness that emerge from violence and discrimination, it is not the linguistic minority that is in the center stage.
Rather, at the center stage at that time is the religious minority. So now you will shift gears and link your first uh, statement with the violence against the religious minorities. So if you look at the issue of minorities, the issue of minority is that of minority consciousness, and this minority consciousness is emerging from the fact that number one, they are less in number, and secondly, they are facing violence and discrimination. And particularly, this is more conspicuous in terms of religious minorities. Now, in the main body, you are going to talk about what we have discussed so far, that the issue of minority, it emerges mostly from minority consciousness, because minority consciousness emerges from violence and discrimination that a minority faces. But do we say that minority consciousness emerged because a minority is less in number? The answer is no. All right. The answer is no. Minority consciousness has nothing to do with the number of people in the minority. Why? If you look at the example of Parsis and Muslims in India, the minority that is facing the problem right now is Muslims. Whereas if you look at the Parsis, they are the smallest minority, yet they do not have the minority consciousness. Whereas the Muslims, which are the largest minority in India, they have minority consciousness. That means minority consciousness is not associated with the numerical strength, and therefore the issue of minority that emerges from minority consciousness, it is rooted in something else. What is that something else? That is, when the minority and other communities in the society, let's call it to be the majority, when the minority and majority have mutually clashing secular interests, at that time the issue of minority crops up. Okay? So the issue of minority crops up when the secular interests of the majority and the minority start contradicting with each other. Now let's look at the second part, discuss the violence and discrimination against religious minorities in India. Now the question is, why violence and discrimination occurs between against the religious minorities in India. देखिए, जब आप रिलीजन की बात करते हो तो दो प्रोसेस रिलीजन में काम करते हैं, एक है फंडामेंटलिज्म और दूसरा है रिवाइवलिज्म. फंडामेंटलिज्म का मतलब है द पीपल हु आर रिलीजियस दे फॉलो देयर ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, एंड रिवाइवलिज्म का मतलब है कि जो नए चेंजेस हैं आप उसको मना कर रहे हो. सो व्हेन यू ट्राई टू गो बैक टू द ओल्ड वेज ऑफ लाइफ and when you go against the changes happening in the society, you come in contradiction with the society. You come in contradiction with the society, and when you come in contradiction with the society, my dear friends, there is supposed to be violence, and there is supposed to be discrimination by the majority of the population that is changing. All right, discrimination and violence, because why? Because you come in conflict with the change. So this is also one of the reasons. Another reason is there are limited resources in the society which all the religious groups are fighting for, and therefore the religious minority feel deprived and a sense of violence creep into their mind because of the limited resources and all the communities fighting for those limited resources. And the third reason for emergence of the perception of violence and discrimination amongst the minorities is the ongoing polarization of the society. सोसाइटी इन जनरल पोलराइज हो रही है, और वो पोलराइजेशन की वजह से माइनॉरिटी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, विच इज अगेन गिविंग देम अ सेंस ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. अब इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि माइनॉरिटी कॉन्शियसनेस को दूर करने का एक ही तरीका है, आप उनको एजुकेट करो ताकि वो चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर पाए. आप उनको एम्प्लॉयमेंट दो ताकि वो एम्पावर हों, और एम्पावरमेंट की वजह से उनका जो माइनॉरिटी कॉन्शियसनेस है वो रिड्यूस हो जाए. ऑलराइट, और आप उनको पॉलिटिकली एम्पावर करो, बिकॉज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर रिमूविंग माइनॉरिटी consciousness. So this is the solution that you are trying to give about the minority consciousness, which is both the cause and the source of violence and discrimination against the minorities. ठीक है? This is the first question
or the model discussion of the first question of the year 2020 paper 2. चलिए दूसरा सवाल देखते हैं. Critically evaluate. Just a critically evaluate the impact of liberalization, privatization and globalization on the working class in India. एलपीजी का इम्पैक्ट आपको देखना है वर्किंग क्लास के ऊपर, एंड दिस इज द इंस्पिरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज द सोर्स दैट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. So the keyword is LPG. So you can define the three process of liberalization, privatization and globalization in the introduction. Liberalization means you are opening up the economy by deregulating those sectors of economy which you otherwise have reserved for the government only to be involved in that sector. Privatization means you are opening the economy for greater participation of the private players, and globalization means you are linking your country's market and people with the market and the people of the world. So these three processes can be your introduction. Now these processes directly relate with the economy, and it is the economy where India's working class is. And therefore, LPG, being related to India's economy, is directly related with the working class as well. So, how you are going to look at the impact? So, you can write few lines about the impact of liberalization. जब गवर्नमेंट ने अपने आप को की सेक्टर से हटाया, when the government removed itself from the key sectors, what it resulted into the working class, वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो जब गवर्नमेंट अपने आप को सेक्टर्स से लिमिट नहीं करती और हटाती है और सेक्टर्स को ओपन कर देती है जनरल मासेस को पार्टिसिपेट करने के लिए, इट रिजल्ट्स इनटू न्यू वेंचर्स कमिंग अप दैट गिव्स राइज टू एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन द कंट्री. Entrepreneurial culture make the private enter into those sectors which were earlier reserved only for the government. That results into job creation, and the job creation gives rise to a new middle class in India. This is the impact of liberalization. मैं आपको दो बता रहा हूँ, आप अपने आंसर में तीन चार भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Alright. Then next paragraph dedicate upon the impact of privatization on workforce. Private players do not give the job security, rather they want you to perform. So with privatization in Indian economy, particularly among the working class, performance has become the more important factor rather than job security. And because performance requires skill, with privatization of Indian economy, there is a greater emphasis on skills. This is the second impact of privatization on workforce. Now, discuss the impact of globalization. Globalization has resulted into MNCs coming to Indian society, Indian economy. MNCs bring with them new forms of technology and skills which are there in other global markets, and therefore this results into dispersion of Indian skill abroad, as well as you can also say it also results into enrichment of Indian economy with skills and technology. With skills and technology from abroad. All right. So it is not just that India's skill is dispersed to the global community, but at the same time, Indian economy is also enriched with new skills and technology from abroad. Another new skills through the development of MNC, जो हमने अभी just discuss किया. ये इम्पैक्ट हो गए आपके एलपीजी के वर्किंग क्लास के ऊपर और इन जनरल इकोनॉमी के ऊपर. अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव्स नहीं लिखे, तो अगर आपके पेपर में लंबा लिखने का स्कोप है तो आप नेगेटिव्स भी लिख दो भैया. लिबरलाइजेशन की वजह से क्या नेगेटिव है? इंडिया के कई सारे कोर सेक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले गए, जैसे डिफेंस, जहाँ पे इंडिया के नो हाउस शुड नॉट बी लीक्ड, तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है लिबरलाइजेशन से. ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. प्राइवेटाइजेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाती है. ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है?
जो एमएनसीज हैं वो इंडियन इकोनॉमी को हाईजैक कर सकती हैं, ग्रीन फील्ड के में इंट्रोड्यूस करके इंडिया की जो इंडिजिनस वर्किंग क्लास उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो नेगेटिव भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, मैंने नहीं किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ऑलराइट, सो दिस इज द मेन body of the question. Now here you can, okay, I think that I missed the slide of the conclusion. In the conclusion, you can conclude by writing a quote from Hanumanta Rao. All right. So I am telling you a quote from the famous economist Hanumanta Rao. Hanumanta Rao said that LPG is like a double-edged sword. If it is regulated and implemented nicely, it will result into wonders for the country. And if it's not regulated and monitored wisely, it will become a bad master, right? So this becomes the conclusion for your question number 2. Let us look into question number 3. The last decade has witnessed an increase in the cases of violence against women in public sphere. Comment on it. देखिए, सवाल है कि पब्लिक स्फीयर में पिछले 1-2 दशक के अंदर क्यों विमेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो नेचर है वो आपको पिछले 10 साल में ये बताना है कि विमेन के अगेंस्ट जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो पब्लिक स्फीयर्स में क्यों हो रहे हैं, या व्हाई इज इट इन द पब्लिक स्फीयर दैट द केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज ऑन अ राइज। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। सो यू कैन first begin your introduction by saying that women in India are vulnerable section of the society. How you are going to open the introduction? You will write why women is considered vulnerable section of the society. So you will say that since the later Vedic period, all right, kahan se? Since the later Vedic period, women has been witnessing domestic women has been witnessing domestication and patriarchal forces in the society that resulted into downgrading of the status of women such that in contemporary time women in the society are vulnerable section. Are you getting my point? So why women is vulnerable section of the society? Because of the since the later Vedic period women in the society are witnessing domestication. वो सिर्फ घरेलू कामों में इंगेज रहने लगी और वाइडर सोसाइटी से उसने विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से आज उसका सोशल एक्सिस्टेंस बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से वो एक वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। ये तो आपका इंट्रोडक्शन बन गया। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट द रेट ऑफ crime against women in public sphere rose by a factor of 5% in last 10 years, और any x% जो आपको पता है आप वो फैक्ट यहाँ पे लास्ट में लिख के आपके इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी के साथ लिंक कर सकते हो। अब मेन बॉडी में आपको एग्जैक्टली बर्डन ऑफ प्रूफ देना है कि क्यों केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर ऑन अ राइज इन पब्लिक डोमेन। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? पहला रीजन है कि जैसे जैसे वुमेन एम्पावर हो रही हैं वैसे वैसे वुमेन चुप नहीं बैठेगी, और जैसे ही शी विल फेस एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस शी इज गोइंग टू रिपोर्ट इट. So the cases ought to increase with the empowerment of women, because women will not be tolerant of any kind of violence against them and they will report it. So with the greater reporting there is a rise in the cases. जो दूसरा पॉइंट है वो भी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के साथ ही एसोसिएटेड है। जो वुमेन एम्पावर होती जा रही है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज करेगी, और जब वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज करेगी तो उस चैलेंज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसमें वुमेन में फेस वायलेंस. Because women is empowering, and with empowerment of women she is posing a greater challenge to the patriarchal nature of the society, it is ought to be realized that women will face challenge as well as conflict and violence. And this is the second reason. Third is empowerment of women. With empowerment of women they are getting de-domesticated, वो अपने घरेलू जिंदगी से बाहर आ रही हैं, and they are becoming more and more engaged with the society. पहले सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, अब वो जैसे जैसे अपने आप को घर से बाहर लेके आ रही है तो हर डोमेन में शी इज फेसिंग वायलेंस बिकॉज ऑफ हर, यू कैन से, कमिंग इनटू पब्लिक लाइफ फ्रॉम जस्ट मेयरली बीइंग इन प्राइवेट. तो जैसे जैसे आप पब्लिक लाइफ में ज़्यादा प्रेजेंस बनाओगे तो उतना वायलेंस भी आपके खिलाफ बढ़ेगा, और खास करके जब आप वल्नरेबल सेक्शन हो. तो 3 पॉइंट तो मैंने आपको दे दिया. चौथा पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि भैया आज की डेट में वायलेंस का नेचर ही बदल गया. आज सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, सेक्सुअल वायलेंस भी वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस भी वायलेंस है. सो विद
Diversification of the forms of violence, the cases of violence against women is on a rise. ठीक है ना, तो ये आपका मेन बॉडी बन जाएगा, इसको सब्सटेंशिएट करिए, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए, यू कैन राइट थ्रू 200 वर्ड्स ऑन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन अलोन. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? इन द कंक्लूजन यू विल से कि भैया जो ये जो वायलेंस है जो हमारे समाज में आप देख रहे हो, ये एक प्रतीक है. किस चीज़ का प्रतीक है? कि हमारी सोसाइटी में बदलाव हो रहा है, हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है. जब चेंज आ रहा है तो सोसाइटी एक चैलेंज देख रही है पेट्रियार्कल नेचर को, और इस पेट्रियार्कल नेचर में इट इज नॉट द पेट्रियार्की सोसाइटी, सॉरी, इस चैलेंज में इट इज नॉट द पेट्रियार्की दैट मस्ट बी विक्टोरियस, rather it is the women that must be victorious. And we have to make sure that the resistance by the women against the patriarchal society must sustain, and the women should come to, or turn out victorious. And over the period of time we are going to see that with more and more empowerment of women, the cases of violence will subside. So देखो आप किस तरीके से हमने एक नेगेटिव डेवलपमेंट को एक ऑप्टिमिज्म का कवर दिया है, राइट? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो. चौथा सवाल देखें, एनालाइज द इंटरलिंकेजेस बिटवीन पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और इक्वलिटी. क्यों पूछा आपसे ये सवाल? आपसे ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि अगर आप इधर पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और इनइक्वलिटी को देखते हो, उन तीनों के बीच में एक कॉमन चीज है. उस कॉमन चीज को हाईलाइट करने के लिए आपसे ये सवाल पूछा है. तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि भैया जो पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और इनइक्वलिटी है, वो तीनों आपस में रिलेट करते हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज किस तरीके से समाज में बटेंगे वो रिजल्ट करेगा into either poverty, deprivation or inequality. So you can, in the introduction, you can write down about the definition of inequality, poverty and deprivation, because this is as much as a part of introduction as well as it is part of main body. All right, so introduction में आप लिख सकते हो that you can write in the introduction that poverty, deprivation and inequality, they all emerge from a common emerging point, and that is distribution of resources. Change the paragraph and it starts your main body. You write inequality is when the social rewards, societal rewards, be it power, be it prestige, or be it property, power or prestige, when these are unequally distributed in the society, it gives rise to inequality. Poverty is nothing but it is the lack of resources for healthy living, which is the definition of absolute poverty, or it is the lack of resources relative to others in the society, which is relative poverty. और तीसरा है डेप्रिवेशन, जब एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप को मना करते राइटफुल ओनरशिप ओवर द रिसोर्सेज, ये डेप्रिवेशन है. ये आपका सेकेंड पैराग्राफ बन गया. अब आप पैराग्राफ चेंज करके बर्डन ऑफ प्रूफ पे आ जाओगे, उनका रिलेशन समझाओगे. इनइक्वलिटी देखिए, इनइक्वलिटी समाज में पावर इम्बैलेंस को जन्म देती है. पावर इम्बैलेंस समाज के अंदर कुछ ग्रुप्स को इतनी पावर दे देता है कि वो दूसरे ग्रुप्स को डिप्राइव करते हैं फॉर अ फेयर शेयर ओवर द रिसोर्सेज व्हिच दे एक्चुअली हैव ओनरशिप अपॉन. अगर ए और बी दो ग्रुप्स हैं और ए के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो इनइक्वलिटी हमने क्रिएट कर दी. इस इनइक्वलिटी की वजह से ए हैज़ मोर पावर सच दैट इट विल नाउ डिनाई बी एनी राइट ऑन द रिसोर्सेज. ऑलराइट, बी का एनी राइट ऑन रिसोर्सेज इज डिनाइड. समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ये अब बी का डेप्रिवेशन हो गया, किसके हाथों? ए के हाथों. ये डेप्रिवेशन हो गया. तो पोवर इनइक्वलिटी किस तरीके से डेप्रिवेशन से लिंक करा? इट इज क्लियर टू यू? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ वीडियो में और एक बार फिर समझो इस चीज को. नाउ डेप्रिवेशन से क्या होगा? डेप्रिवेशन अगर परपिचुअल डेप्रिवेशन है, अगर ए परपिचुअली बी को उसके राइटफुल ओनरशिप मना कर दे रिसोर्सेज की, तो पहले तो बी विल बी हैविंग रिलेटिव पॉवर्टी देन ए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम B will continue becoming poor such that its relative poverty will convert into absolute poverty. So inequality gives rise to deprivation, deprivation gives rise to relative poverty, and constant relative poverty will transform itself into absolute poverty. सब कुछ लॉजिकल है यहाँ पे. तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? देखो जी, बहुत सारे समाज शास्त्र के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनको हम फंक्शनलिस्ट कहते हैं. और फंक्शनलिस्ट ने बोला मेरे दोस्तों कि
इनिक्वलिटी समाज में एक अच्छी चीज है बिकॉज इट एक्ट एज अ मोटिवेशनल डिवाइस, लेकिन इसको यूज करते हुए आप इनिक्वलिटी को डेप्रिवेशन और डेप्रिवेशन को पॉवर्टी में कन्वर्ट होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए आप बोलोगे कि इनिक्वलिटी जो है वो आनी चाहिए सिर्फ इनिक्वलिटी ऑफ आउटकम्स के अंदर, बट inequality of opportunity and inequality of power must not be allowed to thrive in the society. इसलिए extreme inequality should always be checked and prevented from happening in the society, because extreme inequality perpetuates deprivation and results into poverty in the society. Poverty in the society. This is what is required. All right. This is what is required. Let's look at question number 5. All right, let's go a little ahead and let's look at the question number 5. So what does the question number 5 say? Question number 5 say, discuss the problems of elderlies in India and what can be done to mitigate them. So elderlies हमारे समाज में एक vulnerable section का दर्जा उनको दिया जाता है, और this is the motivation for this question, that why does elderlies are called vulnerable section, and if they are vulnerable section, what are the problems that they face, और उनको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि एल्डरलीज जो है उनको वल्नरेबल सेक्शन क्यों बोला जाता है। तो एल्डरलीज आर कंसिडर्ड वल्नरेबल सेक्शन इन द सोसाइटी बिकॉज दे हैव lived their resource rich life and now they have greater dependency upon others. That dependency results into generation of a concept of vulnerability for the elderly in the society. And this vulnerability has resulted into a set of their own problems. So what are the problems that they face? The problems that they face is that of isolation. Nuclear family होने की वजह से they are facing isolation. Secondly, this isolation is particularly more pronounced among the females, which live more than their male partners, and therefore they largely live their life as a destitute towards the end of their natural life. They have lack of emotional support because of isolation, as well as apathetic attitude of the society towards them. Because they are vulnerable, they have lack of mobility, they cannot have easy accessibility. So there's an issue of accessibility as well. Then the fourth is the issue of health and related geriatric problems. There's a loss of income and status in the society, and they are also vulnerable and susceptible to crime and increasing violence in the society. So these are the problems that you can discuss. Now, what can be done? You know that with the India entering into the fourth stage of demographic transition, the government must play an active role in providing an extensive elderly protection plan. All right. Along with that, the values of Indian society must be prevailing in the society. हमारी society में elderlies are seen as a source of wisdom. In our society, elderlies are seen as the storehouse of old knowledge, and such kind of belief system should still be there. So government plan and continuation of Indian values, they are the two perpetual things that can be done to mitigate the problem of elderlies in India. इस प्लान में आप सोशल असिस्टेंस को फोकस करिए, इस प्लान में आप एक्सेसिबिलिटी को फोकस करिए, हेल्थ और जेनेटिक प्रॉब्लम्स को फोकस करिए, उसके साथ साथ ऑल्सो टेल देम दैट दे शुड बी गिवन पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर होता है इमोशनल केयर. So government must ensure emotional care at various government run facilities for the elderly, and this can be done to mitigate this problem, right? So this is something that you can recommend as the second part of the answer as part of the conclusion. Let's look at the sixth question. The sixth question says, write a note on the challenge faced by agrarian class in India and why are the farmers opposing the newly passed agricultural laws. So अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो जो न्यूली पास्ड एग्रीकल्चर लॉज हैं दे हैव बिकम द थिंग ऑफ द पास्ट, सो दे आर नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस क्वेश्चन. बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि फार्मर्स प्रीवियस जो ये एग्रीकल्चर लॉज हैं उनको क्यों अपोज कर रहे थे, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए.
But the primary question that we are more interested in discussing in this particular question is, write a note on the challenges faced by the agrarian class in India. Agrarian class, just like women, just like SCs, STs, just like elderlies, they are again a part of vulnerable section of the society. So you can begin your answer by defining agrarian class, and you can say that in the rural Indian society, all right, in the rural Indian society, whenever there is a agrarian class, whenever we distribute or segment the Indian society based on the class or property relations, it result into emergence of class and not caste in rural India, and those classes become the part of agrarian classes, which have been attempted by Utsa Patnaik when she gave her model of three classes existing in Indian society: Malik, Mazdoor, Kisan. You can give any particular schema, चाहे वो आप डेनियल थॉर्नर का दे दो, चाहे आप उत्साह पटनायक का दे दो, चाहे आप जॉर्फेल्ड का दे दो, किसी का भी दे दो. You can use any of the model to supplement the existence of agrarian classes in the society. For example, Utsav Patnaik says there is Malik, Mazdoor and Kisan. Now, each of these components, so Malik is the landlord, the rich farmer. Mazdoor is the agricultural labor, landless agricultural labor, and Kisan is for small and marginal farmers. Now, each of them have their own problems giving rise to their vulnerabilities. So now let's look into the challenges faced by different agricultural classes in India. For example, if you look at the landless agricultural laborers, they are facing the problem of exploitation by the hands of rich farmer. They are getting exploited by the hands of rich farmer. The small and marginal farmers, they are exploited by those people in the rural India that provide capital at very high rates. This is exploitation in the form of usurious capital. आपने देखा होगा इंडियन सिनेमा के अंदर कि गांव में एक लाला होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है किसान को, और जब किसान वो पैसा नहीं चुका पाता तो लाला उसकी ज़मीन हड़प लेता है. This concept is this is what is known as usurious capital. So small and marginal farmers, they are exploited by usurious capital, the people who give money. Landless and agricultural laborers, they are exploited by the hands of rich farmer by extracting their labor and giving them no money or in the form of bonded labor. Marginal farmers, uh, small and marginal farmers, okay, then medium farmers कर दो इनको. Medium farmers, they suffer from high farm input and irregular weather phenomena, and rich farmers are also vulnerable to weather phenomena. तो आपने हर एग्रीकल्चरल क्लास के अपने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी. कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी हैं जो ये सारे के सारे किसान और एग्रीकल्चरल क्लासेस एक साथ फेस करती हैं. दैट इज डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड पुअर लैंड रिफॉर्म्स total. All right, so these are the challenges. Now the second part of the main body will be, why were farmers opposing the new farm laws? Well, the farmers were opposing the new farm laws because privatization. So because the farmers considered that the new farm laws are attempting privatization of agriculture and the APMC mandi system is coming to an end. They were against privatization of agriculture. सेकेंड प्राइवेटाइजेशन मतलब जो मंडी सिस्टम है उसको एपीएमसी सिस्टम को आप प्राइवेटाइज कर रहे हो. एग्रीकल्चर तो वैसे प्राइवेटाइज्ड है. हमारे यहाँ पे ज़मीन हर एक इंसान के अपने नाम पे है, तो प्राइवेटाइज वो पहले से है, लेकिन आप मंडी सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रहे हो. सो दे वर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द मंडी सिस्टम बाय डिसमेंटलिंग ऑफ एपीएमसी. उनका डर था. दे वर ऑल्सो against that the government in those farm laws was providing no protection to them through a universal MSP. Then जो traders हैं वो इन farm laws में बिल्कुल भी regulated नहीं थे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से फार्मर्स को लग रहा था कि जो लास्ट ट्रेडर्स हैं वो उनकी ज़मीन हड़प लेंगे. और भी बहुत सारे थे. यू नो दिस, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि फार्म लॉज रिपील हो चुके हैं, बट फिर भी ये मोटे मोटे इशू फार्मर्स को थे अबाउट द न्यू फार्म लॉज. ठीक है. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन में आप बोलो कि देखो, कई बार सरकार बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ कोई लॉ लेके आती है, लेकिन वो लॉ
कभी इनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जब गवर्नमेंट लॉ लेकर आती है तो वहां पे देयर इज अ लो लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर हुम द लॉ इज ब्रॉट। तो हो सकता है ये लॉ अच्छे हों, अच्छे बुरा मैं नहीं कमेंट करूंगा, वो तो इम्प्लीमेंट होते और उनका आउटकम होता है उस पर हम कमेंट कर पाते। ऑलराइट, अब वो अच्छे थे या बुरे थे वी डू नॉट नो दैट, बट ये एक नेचुरल फैक्ट है कि कई बार अच्छे अच्छे लॉ भी इनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि देयर इज अ लो लेवल ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर दोज लॉज। नाउ दीज एक्ट्स, जो ये एक्ट्स हैं, they were they were seen as a kind of imposition by the government upon the farmers, क्योंकि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते टाइम और इनेक्ट करते टाइम, ड्राफ्ट करते टाइम आपने किसी भी फार्मर रिप्रेजेंटेशन को लूप में नहीं लिया। सो देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं, they were considering a lack of confidence in these laws, and the government had to bend under the pressure of the farmers, even if we think that the laws were actually good for the farmer. All right. So, what is the way forward? Reenact the laws with due consultation with farmers. Indian agriculture system does need a change, but reenact with the recommended changes by the farmers. Consultation with the beneficiary is very important. Otherwise, it will be seen as a forceful implementation of government's whims and fancies upon the farmers, और इसी वजह से ये एक्ट फेल हो गया। सातवां सवाल देखते हैं। Social engineering has become an important tool for political parties. Discuss the merits and demerits for the use of social engineering in national politics. अच्छा सवाल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो समाज के अंदर जो सेंटिमेंट प्रिवेल करता है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। असली फायदा जो जनता का होना चाहिए उसको छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो रहा है। सो ये जो प्रोसेस है इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके ऊपर ये सवाल पूछा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप सोशल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है? सोशल इंजीनियरिंग इज अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो, आप लोगों के मस्तिष्क को मैनिपुलेट करते हो, सोच को मैनिपुलेट करते हो, विचार को मैनिपुलेट करते हो इन सच अ मैनर that you trick the user into making the choices against their free will. यूजर एक विचारधारा लेके चल रहा है कि मेरे को ये मुद्दों पे बात करनी है, लेकिन आप ऐसे सेंसिटिव या इमोशनल मुद्दों को तूल दे देते हो इलेक्शन टाइम पे कि असली मुद्दे को छोड़ के वो अपनी साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड को, रियल कोर इश्यूज को छोड़ के आपके दिखाए हुए सेंसिटिव, आपके दिखाए हुए इमोशनल मुद्दों के ऊपर केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है। This process of manipulation of the psychology of the people in general is referred to as social engineering. एग्जाम्पल्स हैं सोशल इंजीनियरिंग के। आप असली मुद्दों को छोड़ के धर्म के बेसिस पे सोसाइटी को पोलराइज कर दो। आप लोगों की वल्नरेबिलिटी को यूज करके उनको एक बहुत ही सुदृढ़ भविष्य का सपना दिखा दो, तो वो अपने कोर इश्यूज को छोड़ के उस तरफ देखने लग जाता है। जैसे राम मंदिर। अब राम मंदिर रिलीजन के नाम पे एक तरीके से असली मुद्दों से सरकार का हटना शो करती है। मैं नहीं कह रहा कि कौन सी सरकार, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार कोर इश्यूज को छोड़ के सिर्फ राम मंदिर पे इलेक्शन मुद्दा लड़ जाए तो ये सोशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि राम मंदिर आज की डेट में हमारे समाज में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सरकार लोगों की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उनको एक फॉल्स कॉन्शियसनेस दे और इलेक्शन लड़े, ये एक सोशल इंजीनियरिंग है। लोगों को पाकिस्तान चाइना के नाम पे उलझाए रखे और असली मुद्दों से भटकाए रखे, ये सोशल इंजीनियरिंग है। और इस सोशल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा रोल मीडिया भी प्ले कर सकती है। समझ रहे मेरी बात? ये सोशल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके प्रो क्या है? पहली चीज तो यह है कि जो सोशल इंजीनियरिंग अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है तो पॉलिटिकल पार्टी को जनता के करंट इश्यूज समझ में आते हैं, उनको रियल इश्यूज भी पता चलते हैं और वो सेंसिटिव इश्यूज भी पता चलते हैं जिसपे वो जनता को मैनिपुलेट कर सके। सो एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग गिव्स द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टीज नॉलेज अबाउट व्हाट इश्यूज आर देयर इन द पब्लिक। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में कोर इश्यूज को छोड़ के गवर्नमेंट सिर्फ उन इश्यूज को टारगेट करेगी जो इमोशनली लोगों को मैनिपुलेट करने के काम।
सो ये इसका पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव क्या है? गवर्नमेंट सेट्स गोल्स विच अपीयर अपीलिंग टू द पब्लिक। पब्लिक को लगेगा कि अरे राम मंदिर बन गया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अरे पाकिस्तान को हरा दिया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, चाइना से टक्कर ले ली सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो एक तरीके से आप वो गोल सेट करें जिससे पब्लिक बहुत खुश होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इसके नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है। पहला नेगेटिव तो ये है कि पूरा जनता का ध्यान आप रियल इश्यूज से हटा के सेंसिटिव या सेंसेशनल इश्यूज पे फिक्स कर देते हो, जिसका एज सच कोई इम्प्लीमेंटेशन या एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। जब आप रियल इश्यूज से मुद्दा हटका भटका दो तो जो रिजल्ट है वो है एक वीकन डेमोक्रेसी, क्योंकि पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर फ्री विल। इट इज द ग्रेटर लॉस टू द नेशन when the elections result into formation of a pseudo representative government which is elected in the name of jingoism, in the name of social engineering or manipulation। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है सोशल इंजीनियरिंग के बेसिस पे इलेक्शन फाइट करने से। अब कंक्लूजन क्या है? वापस से आप होपफुल फ्यूचर दिखाएंगे कि भैया जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसकी जिम्मेदारी है भारत में एथिकल इलेक्शंस करवाना। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भारत के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करे और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आए, सो दैट दे डू नॉट यूज सोशल इंजीनियरिंग टू देयर बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज टू द पीपल। तो आपने ऑप्टिमिज्म दिखा दिया यहाँ पे कि भैया ये बॉडी है, इसको स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया जी 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। Question 8. What do you understand by intergenerational gap? Do you agree that intergenerational conflict is increasing due to advancement of technology? Give examples to support your answer. अभी आप देखिए कि बहुत सारे कोर इश्यूज पे नई जनरेशन बहुत बवाल मचा रही है और जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है वो चुप्पी धारे बैठी हुई है। क्लाइमेट चेंज पे नई जनरेशन ने हंगामा मचा रखा है, LGBT गे राइट्स के ऊपर नई जनरेशन ने हंगामा मचा रखा है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर नई जनरेशन ने हंगामा मचा रखा है, और जो पुरानी जनरेशन है वो चुपचाप बैठ के सुन रही है। ये जो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है नई जनरेशन का और पुरानी जनरेशन का, दिस इज नॉन एज इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि देयर इज एन इंटरजेनरेशनल गैप। तो आप अपने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे अबाउट व्हाट इज इंटरजेनरेशनल गैप। So intergenerational gap is nothing but it is the gap of approximately 25 years between the group of people who are born at a distance of 25 years from each other। क्योंकि ज्योग्राफी में और पॉपुलेशन थ्योरी के अंदर ये माना जाता है कि पूरी जनरेशन 25 साल में रिन्यू हो जाती है। So intergenerational gap is a gap between the generations which are separated by 25 years और in multiple of 25 years। आपके और आपके पिताजी के बीच में 25 साल का गैप है, आपके पिताजी और आपके दादाजी में 25 साल का गैप है, आप में और आपके दादाजी में 50 साल का गैप है, 2 जनरेशन का गैप है। So the intergenerational gap is a gap between a group of people who are generally born 25 years from each other। अभी जैसे जेन अल्फा का दौर चल रहा है, उससे पहले जेनजी का दौर था, उससे पहले मिलेनियल्स का दौर था। ये जो मिलेनियल्स है ये एक जनरेशन है। आप और मेरी उम्र के जो इंसान हैं जो 1997 से पहले पैदा हुए हैं, आई थिंक 1982 83 से 97 तक मिलेनियल्स थे, 97 से 2010 तक आपके जेनजी है, और जेनजी का ही आगे कंटिन्यूएशन जेन अल्फा है। ये इंटरजेनरेशनल गैप है। ये इंटरजेनरेशनल गैप इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ावा देता है। So what is intergenerational conflict? Intergenerational conflict is the conflict between two generations which represent a collective tension, strain, a kind of disagreement or antagonism, and this results into a kind of disagreement, and this disagreement is intergenerational conflict। And yes, technology plays to some extent a very big role in intergenerational conflict। For example, टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपकी नई जनरेशन है वो बहुत ही कोहेसिव जुड़ी हुई जनरेशन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जनरेशन है, बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव रखती है और बहुत ही कॉग्निटिवली डेवलप्ड है देन द ओल्डर जनरेशन। टेक्नोलॉजी
ओल्डर जनरेशन को वल्नरेबल और इंफीरियर फील करवाती है बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। और जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज शिफ्टेड द वैल्यू सिस्टम ऑफ द न्यू जनरेशन, ब्रिंगिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ओल्डर जनरेशन। तो वैल्यू सिस्टम में भी गैप आ गया है। एग्जाम्पल, नई जनरेशन क्लाइमेट चेंज पे बात करेगी, गे राइट्स पे बात करेगी, पुरानी जनरेशन चुप्पी धरे बैठती। जब नई जनरेशन टेक्नोलॉजी को एक्सरसाइज करती है तो ओल्डर जनरेशन को लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो टेक्नोलॉजी हैज so tech savvy character of the new generation is seen as a hurdle in the cognitive development by the older generation. So these are the examples. Now what is the conclusion? तो conclusion आप बताओगे that intergenerational conflict is due to difference in the values of the two generation, और वो तब होता है जब सोसाइटी के अंदर आप इनफ एवेन्यू नहीं देते हो लोगों को टू सोशलाइज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। अगर आप वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में लोगों को सोशलाइज होने का मौका दो तो इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अलाउइंग इनफ एवेन्यूज ऑफ सोशलाइजेशन at various stages of life results into greater interaction or junction of different generations together, removing intergenerational gap, removing intergenerational conflict, homogenization of value system, and that is the solution. This is the question number 8. So these were the 8 questions that were part of the sociology paper 2 of the year 2020. In the next video, that is the third video in the series of these 8 videos, I will take up sociology paper 1 2019 paper and discuss with you the model answers. In this video, I'm telling you about how to write the quality answers. Along with that, I'm trying to give you the structure. And I'm also giving you a kind of model answers for these questions that have come in the previous years, so that agar koi bhi similar question फिर से आया, you will be equipped to write the answer. So keep tuned to this series. Keep tuned to Civilstap for such wonderful videos. See you in the next video. Thank you. Have a great day ahead. Bye. Take care.